Hello everyone and a very good evening to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as I have told you that from Sunday onwards we'll be having some topic wise CMAT GK classes. So today I'll be discussing questions around economics and science and technology. Fine. So if I'm audible, just write in the comments, yes sir you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है आप एक बार comment section में लिख दो, yes sir you're audible. So that we can start our session. Okay, so इसमें क्या है? If you see the previous year question of CMAT, they have asked a lot of questions from economics section, bank business section, you can say, and science and technology, right? So I'll be discussing in today's class the previous year question and questions which are related with previous year, so that they ask questions around some famous topics. So I'll be discussing about it in today's class. Okay, fine. So let's start. I'm hoping that at least the question those who are previous year question, you should at least answer those questions. Okay, the first question is, what is the full form of NPCI? Your options are Nano Center for Political Integration, National Payment Corporation of India, National Public Control of India, National Council Process Interaction. What is the right answer to this question? Yes. John Tikasmi, Kush, Kodi Das, Nancy, Jyoti, you all are right. Aman, Anmol. So first of all, A and D you can easily eliminate because these are talking about NCPI hai, iska short form. So this cannot be the answer, right? So the right answer is National Payment Corporation of India. So B is the right answer to this question. मैं इसके बारे में explain करूँगा. Just wait. I'll be explaining this in detail. But let's ask another question. The question number 2. The question number 2 says, which of the following links all the ATMs in India? ये ATMs को small s को small कर लेना. This is like this. ATMs in India. Your options are Indian Bank Association, NSDL, National Securities Depository Limited, National Payment Corporation of India, Reserve Bank of India. What is the right answer to this question? इसका क्या सही जवाब है? कौन सा एक्चुअली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे एटीएम्स को लिंक करती है इंडिया में? सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. ओके, थिंक एंड आंसर इट. यस, व्हाट इज द राइट आंसर? सम पीपल आर सेइंग बी, कुछ लोग सी बता रहे हैं. सो सम पीपल आर एक्चुअली बताओ, say what is the right answer. Which of the following banks links all the ATMs in India? Yes, some are saying A, kuch log B. So Mohan, Khodidas, Nidhi, some people are actually right, very few are right. Okay, fine, I agree, but this is a slightly googly, right? Now the right answer to this question is also C, National Payment Corporation of India. NPCI is the right answer to this question. Now they have asked it I think 1 or 2 years back about this NPCI, and that is why they can ask this. See, this is a question asked in, I think, some very standard, perhaps in UPSC exam, this question was asked. This is a very straightforward, but the reason why I gave you is because similar question was asked in CMAT. Now, I will explain, just do not bother. You must have seen these things. You must be aware of Bheem app. If you download this UPI, I hope you are aware, everyone must have done transaction through UPI, what we call it as Unified Payment Interface, right? Okay. Now, so this, are you seeing this color? This logo, the orange and green logo. This is a logo of NPCI, National Payment Corporation of India. So yes, even if you are doing transaction with now Paytm, if you open Paytm app, you will see Bheem written there as well. And so they have done some actually collaboration with that, right? Now, the second thing is, if you read it, NPCI is responsible for controlling all the things UPI in India. This you must be knowing it. National Payment Corporation of India is controlling all the UPI payments. Bheem app has been developed by NPCI only. This app has been developed by NPCI only. Okay? Okay. Now, all these things like RuPay, जहां पर भी ये वाला रहेगा ना, this logo. This is talking about NPCI, National Payment Corporation of India. Fine. FASTag, Bheem, UPI, all these are actually related with the same. Now, why is NPCI so important? The first thing is, yes, it is an umbrella organization
formed on the initiative of Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India and IBA Indian Bank Association was instrumental in making the NPCI. In fact, at many places it says that it is one of the division of NPCI, RBI and all. Yes, okay. So you should be, it was created by RBI for creating retail payments and settlement system. So all the transactions ATM based and all and the UPI based transaction is controlled and regulated by National Payment Corporation of India, right? They have asked it, यही इसका logo है, जहां पर भी ये देखोगे, whenever you see this, you should be sure that this is actually the logo of National Payment Corporation of India. ठीक है? It is headquartered in Mumbai. These are the chairmen. Just go through it, because yes, you should be knowing it about National Payment Corporation of India. अब इसके बारे में, if you go through the Wikipedia, you will find a lot of services being provided. But some of them I'm highlighting. Wherever you are talking about payment system like RuPay, UPI is very famous, so everyone is aware of this. Bharat QR. Now, few years back, 1 or 2 years back, this also became very famous. E-Rupee. आपने नाम सुना था इसका? Again, the same thing. The logo is this one. ये वाला logo है. So it is referring to National Payment Corporation of India. Okay, so this is the credit goes to NPCI. So you must be knowing it because yes, they can ask questions associated with that also. Okay, the next one is debenture holders of a company are its shareholders, directors, creditors, debtors. What is the right answer to this question? पहले I want to know, अच्छा पहले आप इसका आंसर कर दो, but I want to know whether you know the meanings of all these 4 terms or not. If you do not know, I will explain it. ठीक है? Okay. हाँ, Ashneer Grover is related with Bharat Pay, right? हाँ, correct. चलो आप इसका आंसर बताओ. Debenture holders of a company are its shareholders, directors, creditors, debtors. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ guys. I have worked very hard to make today's PPT. ठीक है, मैंने सारा previous year question निकाला, उसके पैटर्न में जो जो टॉपिक्स बनते हैं उसको मैंने बनाया. So please everyone press the like button. Yes. People are saying C. Yes, Aman Mishra, Chinmay, Avani, Omkar, Somit, Ayushi Agarwal, you are right. Agrima, the right answer is creditors. So C is the right answer to this question. देखो पहले एक चीज बताते हैं. What is debenture? Debenture is nothing but bond. ठीक है? Okay. Now, first of all, what is shareholder? So if you are buying a share of any company or equity, है ना, या stock, है ना. So these are actually the term associated with that. And if you buy a share, you will be getting dividend from that company. Yes, आपको dividend मिलेगा. Director तो जानते होगे, director in a company, I don't need to explain. Creditors, the one who gives loan. Person who gives loan to the company और जिसको भी है ना. Debtor मतलब person who takes loan. Person or organization, it can be organization, who borrows loan or takes loan. जो लेता है कर्ज उसको debtor कहते हैं. Now, when you are buying a bond, so let's say you are buying, this is you, X is your name. You are buying a bond of company, ABC is the name of company. Okay. Now, when you are buying a bond or debenture, both are same thing. When you are buying a bond of a company, you are paying something. It means you are giving loan to that company. I hope you are aware. This concept is very simple. If you are buying a bond of any company, you are basically giving loan to that company. Yes. So when you are giving loan, you are becomes creditor. कर्ज देने वाला. ठीक है. So the debenture holder or bond holder is the one who has given loan to the company. जिसने कर्ज दिया है. Is it clear? I think it's very much simple, crystal clear. C is the right answer to this question. Concept भी समझना जरूरी है ताकि bonds, debentures आपको समझ में आए. Yes, so that in the whenever there will be questions regarding it, you will be able to understand. ठीक है. जैसे for example, you must have heard about treasury bills, famous in USA actually. This is also a sort of a bond, है ना? Yes. Similarly, we have government securities, GSEC we write it. Government security. This is famous in India. So bond issued by Government of India, ना? Issued by Government of India. GOI I am writing in short. ठीक है. Treasury bill is bond generally issued by US government. ठीक है. हालांकि treasury bill is there in India also, but yes, famous in USA and all. ठीक है.
So you should be knowing it. Okay. नहीं निधि PDF तो नहीं मिल पाएगी. You can watch it again on 2x speed या 1.5x speed, the same video. ठीक है? So that will be easy. हाँ. Yes. हाँ, fine, very good. हाँ. Okay. Yes, इसी तरह कॉन्सेप्ट होता है. अच्छा चलो ये होमवर्क है, पढ़ लेना. There is something called as commercial paper and another is called as certificate of deposits. Certificate of deposits. Both are actually short term loans. इसको पढ़ लेना after the class is over. Short term loans. Okay, so what are commercial papers and certificate of deposits? Just go and read it something. Okay. The next one is, this is also a question. What is the full form of CRR? Your options are corporate reserve ratio, cash reserve ratio, current reserve ratio, custom reserve ratio. What is the right answer to this question? CRR का full form क्या है? सबको like button press करते जाओ. Everyone please press the like button guys. At least 100 plus likes ले जाओ. Everyone. Yes. Yes. The right answer is cash reserve ratio. So basically this is the percentage amount which every bank is supposed to keep with RBI, and this is without interest. Always remember, the cash reserve ratio always comes without interest. Okay. So the right answer is B. Many people have answered it, so I'm not taking the name. Okay. Now some homework you are supposed to do, and this is seriously I'm saying. The first is SLR, statutory liquidity ratio. So go and read what is this. A statutory liquidity ratio. Okay. ये क्या होता है पढ़ो. What is CRR ये भी पढ़ना. एक चीज और बता दे. MSF, marginal standing facility. Marginal standing facility. इसे फुल फॉर्म में भी हो सकता है, पूछ ले. और what it is actually, है ना. एक और होता है MCLR. MCLR, marginal cost of funds for lending rates. इसको पढ़ लेना, ठीक है. MCLR, marginal cost of funds for lending rates. Now some other words are repo rate, the interest rate at which RBI gives loan to the commercial banks. Another is called as reverse repo rate. ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना after the class is over. ठीक है, they can ask these things. Actually repo rate का ही दूसरा नाम है. Another name, very famous name is policy rates भी कहते हैं कई बार. ठीक है, policy rates, repo rates, same thing. Okay. Now all these are decided by whom? Which organization is responsible for deciding these things? So these are called as monetary policy tools. इसको कहते हैं क्या हम लोग? Monetary policy tools. Yes. है ना? So okay, yes. Now similarly हाँ, repo rate और bank rate भी similar होता है, थोड़ा सा फर्क होता है. Yes. that's correct. देखो earlier क्या होता था, RBI was responsible for handling those things, but now we are having MPC, Monetary Policy Committee. Okay, after 2016 we are having a 6-member committee, okay, comprising 3 members from RBI and 3 members from central government. Is it clear? ठीक है. And the MPC chairman is actually the RBI governor. ठीक है. So from here, yes, endless AJ, I hope that yes, questions would be coming from here. I'm trying my best. MPC मतलब Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee. Okay. So this is the committee which is responsible for deciding reverse rate, repo rate, reverse repo rate, statutory liquidity ratio, CRR, SLR. ठीक है, marginal standing facility, MCLR. ये सब पढ़ लीजिएगा. These terms I have told you. So just go and read these terminologies. ठीक है. At least full form ही याद करके चले जाना ना. ठीक है. But they can ask repo rate, they can ask policy rate, MCLR, these things they can ask. Okay. Yes. Now the next one is, what is the full form of SLR? बताओ. अभी just बताया. Single largest ratio, statutory liquidity ratio, status liquidity ratio, report status liquidity ratio. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है बताइए. I have just told you. Yes, Aman, Anmol, Jyoti, Nancy, you are right. Statutory liquidity ratio, SLR, is statutory liquidity ratio. ठीक है, so B is the right answer to this question. Okay. So they are supposed to maintain the form of liquid cash, gold, other securities. इसको पढ़ लेना. Please go and read it. That a commercial bank has to maintain a certain
amount in liquid cash, gold and other securities, in that they cannot extend loans. So that is SLR. The next one is, which of the following is the credit rating agency in India? MIX, CARE, SEBI, BARC. What is the right answer to this question? Credit rating agency कौन सी इंडिया की? So what is the job of credit rating agency? It actually tells, the credit rating, or means credit rating समझते हो? You understand credit rating? It tells how the performance of any company is as far as returning back loan is concerned. It can be, credit rating can be given to a country, it can be given to a company, है ना? Yes, the right answer is CARE. So B is the right answer to this question. You must be knowing it, that CARE is the credit rating agency of India. So go and read some more famous credit rating agency like Standards and Poor's. आपने नाम सुना होगा. CRISIL. Have you heard these terms? है ना? Moody's is also, I think, a credit rating agency. These are very famous international level credit rating agencies, right? Then let's talk about another question. Who regulates the credit rating agency in India? Now I'm asking about regulation. RBI, SEBI, Bombay Stock Exchange, NPCI, National Payment Corporation of India. हाँ, ICRA and CARE are Indian. Yes. नवंबर सिंह जो CMAT का जो प्लेलिस्ट बना है ना, वो वाला देख लेना वीडियो, ठीक है? We'll be coming up with more contents, ठीक है? Tomorrow 3 p.m. we'll be having one class also, ठीक है? Okay. Yes, what is the right answer? Who regulates? Now, देखो, Bombay Stock Exchange is not a regulatory body. NPCI is concerned with what? Transactions, UPI transactions and all. So how can this be the answer? The right answer is SEBI, Securities and Exchange Board of India, right? B is the right answer. It is responsible, in fact, for regulating Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange also. Okay? So you should be knowing it. Now, there's a homework. Go and find out what is the index of Bombay Stock Exchange and what is the index of National Stock Exchange. चलो मैं ही बता देता हूँ. Nifty 50. 50 companies are actually calculated, while the performance of 50 companies are calculated here. And this is Sensex, है ना? इसमें 30 companies performance are calculated, है ना? Okay, so Ministry of Finance के अंडर में SEBI है. 1992 को बनाया गया था. Earlier, actually, it was established in 1988. At that time, it was not a statutory body. Later on, SEBI Act was passed, ठीक है? In 1992, and now it is a statutory body. Okay. Okay, please tell me in the comment section who is the chairperson of SEBI right now. SEBI chairperson कौन है? Okay. So that is what you should be knowing. देखो statutory body क्या होता है? Statutory लिखा हुआ कहीं पे नहीं. Statutory body means the body which is a result of a parliamentary law. Parliamentary law, or it derives power from parliamentary law. So SEBI Act was passed in 1992. Why? Because I hope you are aware of Harshal Mehta scam and all that happened, and that is why the parliament has to bring a law and all in this regard. Yes, so the right answer is Madhavi Puri Booch. Actually, she was famous because last year she was appointed the first woman chairperson of SEBI. Okay, so that is why, since she is the first female, you must be knowing it. Yes, many people have answered it. है ना? Regulatory body Mumbai headquarter है इसका, ठीक है? Okay, established in 88, but later on SEBI Act was passed, so it got statutory status later on. Okay, the next one is question number 8. Which of the following constitutional body is responsible for auditing all receipts and expenditure of the government of India and government of states? State government, Finance Ministry, CAG, RBI, SEBI. What is the right answer to this question? सबको like button press करते जाओ, guys. These are very important questions. ठीक है? November, we hope so that questions will be coming from here. Yes. Yes, the right answer is CAG, Comptroller and Auditor General of India, under Article 148, is actually responsible for auditing and all. है ना? So CAG full form auditor, auditing से related है ना? Okay. So Mr. GC Murmu is actually the CAG of India. So you should be knowing. B is the right answer. Yes, Nimisha, Rocky Bhai, Anmol, Amisha Kumari, you all are right. The next one is question number 9. Which of the following is not an online mode of money transfer in India? Your options are IFSC, NEFT, IMPS, RTGS. What is the right answer? देख रहे हो, NPCI से पहले क्वेश्चन पूछा, हाँ?
which is related with transaction, right? UPI transaction and all. And then they ask question about money transfer. तो money transfer से related questions पूछते हैं वो, ठीक है. होता क्या है कि जो क्वेश्चन मेकर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है, उसी से फिर ट्राई करता है, उसी से रिलेटेड चीजें जनरली डिस्कस करते हैं ना. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? देखो IFSC नहीं है. देखो IFSC इनफैक्ट कोड इज यूज्ड दिस टू एक्चुअली ट्रांसफर दीज थिंग्स, है ना, थ्रू दीज मेथड्स. ये तो आपको पता होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम X to Y, तो आप मांगते हो कि सी प्लीज टेल मी योर अकाउंट नंबर, है ना, व्हाट इज योर IFSC कोड. सो वंस यू विल then only you can transfer money. You should be knowing the Mr. Y's account number, the bank account and IFSC code. We ask कि आप IFSC code बताओ. So NEFT, IMPS and RTGS are the three methods of online transfer, ठीक है. And IFSC is actually a code, 11-digit number, with the help of which we can transfer. So I think it's an easy question. A is the right answer to this question. Yes. देखो ये पेटीएम से UPI, देखो यहाँ पर भी NPCI का लोगो बना हुआ है ना. Yes. Okay, so NEFT, RTGS, IMPS get difference. It is given on the website of Paytm. If you are interested, you can read it. The next one is NITI Aayog replace which are the following. Actually, थोड़ा सा different form में दिया होता. I have slightly changed this question. हाँ. IMPS भी सिस्टम होता है. ये तीनों ट्रांसफर का सिस्टम होता है. ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो आप, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, घर बैठ के, ठीक है. जैसे NEFT, RTGS फेमस है, बट IMPS भी होता है, ठीक है. Someone is asking sir IMPS, ठीक है. So you should be knowing it. This question is also asked in a different fashion, but I have slightly changed the question. ठीक है, but इस तरह का question पूछा था. नीति आयोग replaced which of the following? Yes, planning commission. It was set up in the year March 1950 by Jawaharlal Nehru, and it got abolished in I think August September 2014. And NITI Aayog came on 1st January 2015. I have seen in exam asking days, years also कि कब establish हुआ, कब हटा, something like that. ठीक है. So you should be knowing. Actually, question was reverse. कि planning commission got replaced by which organization? And the answer was NITI Aayog. So I have reversed the question. ठीक है. The right answer is B is the right answer to this question. ये पूछा था ना. I hope you are aware the full form National Institution for Transforming India, है ना. And who is the chairperson or chairman of NITI Aayog? What is the right answer? Okay. So इसका तो आंसर B हो गया. Let's move on. Question number 11. Who is the vice chairperson of NITI Aayog? Mr. Rajiv Kumar, Mr. Arvind Panagaria, Mr. Suman Beri, Mr. BVR Subramaniam. What is the right answer to this question? Chairperson is actually PM Modi. Aman Mishra is right. Very good. So the chairperson actually in case of planning commission was also the prime minister at that time, and in case of NITI Aayog is Modi ji. So PM Modi. Okay. And who is the vice chairman then? Yes. वाइस चेयरपर्सन, बिकॉज जनरली वाइस चेयरपर्सन ही पूछेंगे, इतना आसान नहीं पूछ देंगे चेयरपर्सन. यस, द वाइस चेयरपर्सन इज, आई एम सरप्राइज्ड टू सी सो मेनी रॉन्ग आंसर्स. यस, पार्थ इज राइट. C is the right answer to this question. Yes, if you see it carefully, that is why I have given it. So vice chairperson is Mr. Suman Beri and CEO, Chief Executive Officer is BVR Subramaniam. And before BVR Subramaniam, the CEO was Amitabh Kant. He was very famous, है ना? So now, Hana. So please be aware of it. Vice chairperson is Suman Beri and CEO is BVR Subramaniam. And अगर first पूछा जाए, first vice chairperson जो थे ना वो ये थे, ठीक है? But now he is no more. I mean, he is no more the vice chairperson, ठीक है? So the right answer in this case is option C, and here is CEO. ठीक है? सब पता होना चाहिए. These are basic questions being asked in exam. Okay, it's a national institution for transforming India, apex public board. This is for public policy actually, for deciding public policy and all, है ना? Bottom approach. इसे पढ़ लेना, इसको ज़्यादा डिटेल ही जाना है ना? इसको पढ़ लो. न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर होगा, ऑफ कोर्स. कॉमन सेंस इज. The next is how many banks were nationalized in 1969 by Indira Gandhi government? 14, 16, 8, 9. What is the right answer to this question? Nationalization, you understand? ये समझते हो nationalization क्या होता है? Nationalization. What is the meaning of nationalization? Can anyone tell me? Yes, 14 banks were nationalized by Indira Gandhi government in 1969 is the right answer. Many people are right. This is the cover page of Times of India.
30 जुलाई 1969 का ये पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है देखो टॉप में, तो रीड इट, 14 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, है ना, ऑर्डिनेंस फॉलोज यूनानिमस कैबिनेट डिसीजन, यस, सो एक्चुअली द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी ने ठीक से नहीं बताया, पब्लिक गवर्नमेंट बैंक्स, पीएसयू, ओके। दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड, देखो इंदिरा गांधी एक्चुअली शी इज फेमस फॉर नेशनलाइजेशन 2 times। इन 1969 14 banks got nationalized, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 14 banks, and in 1980 how many banks got nationalized? This was asked in previous year CMAT, 5, 6, 7, 8. What is the right answer? Private ownership banks which are owned by government, yes, 51% share of government, yes, Chinmay Tiwari, so yes Prabhu, you are actually very near, हाँ बहुत से लोग government control, yes Shri Gaurav, right, हाँ। So what is the right answer to this question? 6 bank, ठीक है। So the right answer is B. 6 banks got nationalized in the year 1980. So you can see 6 more commercial banks got nationalized, है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है ना, 16 अप्रैल 1980 की, बहुत पुरानी न्यूज है, ठीक है। So the right answer is B is the right answer to this question. देखो आपको एकदम सिंपल भाषा में समझना है। So if this goes the direction of nationalization, है ना, the opposite is privatization, ठीक है, ठीक है, ओके। सो इट्स नॉट वेरी टफ, देखो अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, सो इफ समथिंग गोज फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू गवर्नमेंट इट्स नेशनलाइजेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी शेयर, ठीक है ना, मतलब 51% वाला शेयर की बात करें, एंड इफ फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनी दैट्स कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, दैट्स सिंपल, ठीक है। अच्छा, एयर इंडिया इज वेरी मच इन द न्यूज, आई होप यू आर अवेयर। एयर इंडिया के बारे में आप जानते हो होपफुली। व्हेन वाज इट गॉट नेशनलाइज्ड? 1953 नेशनलाइजेशन हैपेंड, टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एंड यू कैन से 2021 22 तक इट गॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, है ना, अगेन टेकन ओवर बाय बैक बाय टाटा, है ना, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। अच्छा, एक चीज और होमवर्क है, प्लीज गो एंड रीड अबाउट 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? कैन एनीवन टेल मी? लिबरलाइजेशन, privatization, globalization, right? Liberalization, privatization, globalization। सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना। एक और चीज पूछते ये हैं कि who was the prime minister at that time, ठीक है। So the prime minister at that time was Mr. P.V. Narasimha Rao, and who was the finance minister at that time? Then the answer would be Mr. Manmohan Singh, who later became the prime minister as well, है ना। ये सब पता होना चाहिए, सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो यू मस्ट बी नोइंग इट, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड ऑल बेसिक आइडिया अबाउट इट, है ना, बिकॉज दीज आर रेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स। Okay, the next one is question number 14. Imperial Bank of India became State Bank of India in the year 45, 55, 71, 65. What is the right answer? ये भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए ये सब सवाल। गाइस रिक्वेस्ट है सारे लोग लाइक बटन प्रेस करते जाना। एवरीवन कम से कम 100+ ले जाओ यार लाइक्स को। Imperial Bank of India became State Bank of India in the year? Yes, Parth, Shubham Sharma, Mohan, Gauti Das, Ayushi, you all right. 1955 B is the right answer to this question. देखो एक्चुअली ये 3 बैंक था पहले, 3 अलग था बैंक, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बोथ गॉट, ऑल द 3 गॉट मर्ज इन 1921 टू फॉर्म इंपीरियल बैंक, ठीक है। एंड आप देख सकते हो, एंड इन 1955 इंपीरियल बैंक बिकेम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच इज वेरी फेमस, आई होप यू आर अवेयर, ठीक है। सो यू मस्ट बी नोइंग इट, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, कुछ चीज और पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। Who is the chairman? I have seen sometimes this question being asked. So the chairman of SBI is Mr. Dinesh Kumar Khara. So please be aware of that. The headquarter is in Mumbai. देखो mostly things associated with finances, headquarter you will find it in Mumbai. Like for example, SEBI, RBI, SBI, ठीक है, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, all are headquartered in Mumbai. Yes, ठीक है। So finance related चीजें headquarter मुंबई में होती है।
why I'm saying sometimes you forget, so you can apply some common sense है ना to reach to the answer. ठीक है. The next thing is, one more thing I want to ask is, there are 3 banks in India which have been declared as TBTF. ये मैंने बताया है, too big to fail bank, too big to fail bank. ठीक है. उसमें से there are 3 banks. One is SBI. What are those other 2? बताओ. HDFC and ICICI. ठीक है. So these are considered as too big to fail banks. इसको लिए एक और वर्ड लिखते हैं, DSIB banks भी लिखते हैं, domestically systematically important banks something करके. ठीक है. So you must be knowing it. Yes, Shubham Sharma has answered it correctly. Very good. Okay, so you must be knowing these facts है ना. तो मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है. Yes, it is 49th largest bank in the world है ना. इसमें 5th largest employer in India है. तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए. Too big to fail banks में HDFC ICICI के साथ है. So just have a basic idea. Earlier it was called as Imperial Bank and all. Because yes, from economics they can ask questions. Okay, so the next one is Reserve Bank of India. Was established under which act? Banking Regulation Act 1949, RBI Act 1934. Provisions mentioned in the Constitution of India, none of the above. कहाँ से? बताओ. What is the right answer? I think it's very easy. Even the common sense says this. कोशिश क्या करो ना कि ऑप्शन में या क्वेश्चन का कोई कीवर्ड मैच कर रहा है, सो आंसर की प्रोबेबिलिटी हाई होती है. ठीक है. So if the keyword in the question and the option matches, the probability is very high. So the right answer is B is the right answer. Banking RBI Act 1934. So B is the right answer to this question. Very good. A lot of people have answered it. RBI was nationalized in the year 1st January 1947, 15th August 1947, 26th January 1950, 1st January 1949. ये बताओ, RBI को nationalize कब किया गया था? देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. इट शुड हैव हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो. यस. हाँ, यस, साल्टी स्टैक, यस, इट वाज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. करेक्ट. हाँ, मतलब रिकमेंडेशंस वर देयर. देखो, this cannot be the answer. At least the day we got independence, on the same day we will rationalize RBI. It's very difficult to believe. ठीक है. So the right answer is 1st January 1949. D is the right answer. I have seen this question in many exams. ठीक है. So D is the right answer. Yes. ठीक है. Reserve Bank of India is India Central Bank and all. ठीक है. Ministry of Finance के अंडर में आता है. Okay. It has printing press at Nasik, Devas, Mysore, Salboni in West Bengal. NPCI उसी ने establish किया है. ठीक है. Nationalized on 1st January 1949 है ना. It works under RBI Act 1934. ठीक है. But it started operation on 1935, 1 year later. ठीक है. Yes. Mumbai headquarter है Shaktikant Das. Mr. Shaktikant Das is actually the governor of RBI. You must be aware of that. Let's move on. Yes, I hope you are aware of him. He's a former retired IAS officer also. The next one is exim policy of India is prepared by RBI, SEBI, Ministry of Commerce, Ministry of Finance. देखो, I think this is not, even if you do not know it, I will tell some ideas. ठीक है ना, कि how to reach to the answer if there's a question in the class exam and you do not know it. So how to eliminate option? पहले देखो, हाँ सीधी लिस्ट में फर्स्ट टाइम पे करना. वेरी गुड. हाँ देखो, पहले आपको ये समझना है कि ये कैपिटल में लिखा है, इट मींस इट मस्ट हैव सम फुल फॉर्म. एक्जिम ब्रैकेट बीच तोड़ दो. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. यस. So they're talking about export import policy of India is prepared by whom? Okay, first thing. Second thing is, मान लो आपको नहीं पता है, you do not know. First thing, policy is always made by government, है ना. Policy making or ministry will be making the policy. RBI and SEBI generally is very difficult for us to believe, but yes, in some cases, in monetary policy case, some policies are being made. But generally policy जो होता है ना, ministry के द्वारा ही होता है. So the right answer here is Ministry of Commerce. DGFT बनाती है, Directorate General of Foreign Trade. DGFT under Ministry of Commerce and Industry. देखो, foreign trade policy, I just in the morning I searched it and this is actually foreign trade policy का एक PDF यहाँ पे available है. ठीक है, न्यू लिखा हुआ भी है ना. So it got released on 31st March recently, so you can download it if you are interested, है ना. So the right answer is C. ठीक है. The next is the term extended fund facility. It has been the news.
is in the news related with what? World Bank, IMF, World Economic Forum, New Development Bank. What is the right answer to this question? Extended Fund Facility. इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है. So similar type, I mean, the question related with these topics have been asked. That is why I am trying my best to ensure कि classes is effective for you, है ना, कि आपका डायरेक्ट क्लास से ही आ जाए, कहीं और से नहीं आए, आप सिर्फ क्लास देख के जाओ, उसी से काम चल जाए. That is what I am trying my best, है ना. कहां से लिया गया? The right answer is IMF, है ना. International Monetary Fund is the right answer to this question. ठीक है. So B is the right answer. Yes. Aman Mishra, Rocky Bhai, Sumit, Siddharth, you all are right. Okay, IMF board approves $3 billion under new extended fund facility arrangement for Sri Lanka. I hope you are aware everything is not fine with Sri Lanka, and that is why they have extended EFF. This came in the Hindu editorial also. If you are reading it daily, you must have seen this. ठीक है. Similarly, यूक्रेन के लिए भी extended fund facility initiate किया गया था IMF के द्वारा. So you must be knowing it. Okay. Yes. Now, this was actually the question asked in exam. In case of balance of payment crisis, which country is which institution helps? World Bank, WTO, IMF, Asian Development Bank. Yes. Balance of payment crisis का मतलब क्या होता है? Balance of payment crisis means when forex reserve is very less, है ना, forex reserve or foreign exchange reserve, you can say. Forex reserve ही का दूसरा नाम मतलब long name is foreign exchange reserve is very less. Which country will be coming and helping? अभी आप common sense लगाओ. Forex crisis कहाँ भी श्रीलंका में हुआ था, and I have just told you. ये तो मैंने बताया है. Yes. So IMF comes and helps. Always remember. ठीक है. So C is the right answer to this question. Yes, Ayushi Agarwal, Soyesh, Nidhi, Amisha, Kumari, जिन्होंने भी C आंसर किया. Yes, you all are right, है ना. World Bank generally development में projects में देता है ना, development projects related. देखो WTO क्या, World Trade Organization. It will be talking mostly about trade agreements. तो agreements, free trade agreement वगैरह से related है. ठीक है. Okay, is it clear? So the right answer, the most perfect answer is C. Balance of payment crisis में help will होता है ना. It's a major financing authority. यहाँ पे देखो लिखा होगा. It is helpful and balance of payment crisis. ठीक है. अच्छा, जिस तरह अभी extended fund facility, उसी तरह एक और टर्म होता है rapid credit facility something करके, rapid credit facility. Okay. Rapid financing facility. These are also related with IMF. ये IMF का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, लोन्स देने का, है ना. So just have an idea about it. The next one is, हाँ, एक चीज और है कि 3rd मई को, मतलब एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले, 1 day before exam at 11 AM will be having, from 11 AM onwards will be having marathon session. तो उसमें भी मैं I will be taking the class. उसमें भी बहुत important, very important topic based sessions लेने वाला हूँ. So do join that as well, है ना. Which of the following is not the result of Bretton Woods Conference? World Bank, IMF, GATT, WTO. What is the right answer? Not the result of Bretton Woods. अच्छा, पहले ये जानो Bretton Woods Conference कहाँ हुआ था? Happened in 1944. Now Bretton Woods is actually a city in New Hampshire, or New Hampshire is actually a province in northeast USA में आपको मिलेगा ना. So 1944 it happened and it resulted into the formation of World Bank, IMF and GATT. Not पूछ रहा है, so the answer is WTO. ठीक है. Now देखो, actually Bretton Woods Conference resulted in the formation of these three. This was later on in 1995 replaced by WTO. ठीक है. Okay. World Bank, IMF is International Monetary Fund, GATT मतलब होता है General Agreement on Trade and Tariff. It was not very successful, so later replaced by WTO. And WTO is a result of Marrakesh Agreement. है ना, लिखा ना, thus replacing GATT and all. Yes. So you must be knowing it. तो not पूछ रहा है, so D is the right answer to this question. अच्छा, एक homework है, go and find out the headquarters of these organizations. Who is the head, chairman and all. Otherwise I am giving you in the same class. ठीक है. So it was established in 1995, WTO and all. Where is the headquarters of IMF? Geneva, Washington DC, New York, Paris. बताओ सबको. Yes guys, please 100+ likes ले जाओ यार सबको. Everyone, please press the like button. We have worked very hard. I have worked very hard to make these PPTs. इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा रिसर्च किया मैंने, उससे उस पर पैटर्न पर सारा क्वेश्चन बनाया हूँ. Yes,
The right answer is Washington DC, the capital of USA. So IMF का headquarter आपको वहां मिलेगा. B is the right answer. Yes, खोदेदास, शोभा, मामन, मिश्रा, you all right. कुछ और चीजें पता होना चाहिए. वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. एक और चीज याद रखना, ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इज फ्रॉम इंडिया, गीता गोपीनाथ. दैट ऑल्सो यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, बिकॉज शी इज एन इंडियन ओरिजिन लेडी, है ना. सो यू मस्ट बी नोइंग इट. अभी मैंने इनका फोटो भी दिखाया था पीछे, यहाँ देखो. दिस इज एक्चुअली गीता गोपीनाथ फ्रॉम इंडिया. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग इट. This is very, very important. The next one is, where is the headquarter of World Bank? Geneva, Washington DC, न्यूयॉर्क, पेरिस. अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे एक है IDA, है ना. फिर एक है ICSID, IFFC, 3-4 MCS, IDA, ICSID, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. 4-5 इसके एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है. इसको एक बार पढ़ लेना, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ग्रुप सर्च करना. 5 आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, है ना. आई थिंक मीगा भी एक है उसमें से. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर. ठीक है, so go and read about it. IBRD, हाँ. So these are 5 ones. ठीक है, okay. So headquarter again is in Washington DC. B is the right answer, not New York. न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है. UN हेडक्वार्टर you will find in New York. ठीक है, so don't be confused. And the right answer is B, Washington DC. Yes, president is David Malpass. ये पता होना चाहिए because Anshula Kant is also an Indian origin lady, है ना. MD and CFO. MD मतलब managing director, CFO means chief financial officer. Anshula Kant. And recently Indermeet Gill was made chief economist. ठीक है, you must be knowing it. And there's one more question, who is going to be the new president of World Bank? Your options are Ajay Banga, Mr. Ajay Banga, Indermeet Gill, Geeta Gopinath, MS Swaminathan. What is the right answer? कौशल PDF तो नहीं मिल पाएगा. What I suggest is you can watch it again at 1.5x या 2x स्पीड पर. एक बार और जैसे दोबारा देखना हो ना, तो 2x स्पीड पे जल्दी में देख लेना, तो उससे आपको स्पीड में कवर हो जाएगा. ठीक है, हाँ. द राइट आंसर इज अजय बांगा इज द राइट आंसर. आई होप यू आर अवेयर. मैंने अभी बताया इंदरमीत गिल जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए. गीता गोपीनाथ इज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, है ना. And MS Swaminathan is associated with Green Revolution. I hope you are aware. Father of Green Revolution in India is MS Swaminathan. So the right answer is Ajay Banga. Indian American Ajay Banga poised to become World Bank chief unopposed. So A is the right answer. Yes. John T. Kazmi, Shri Gaurav, Shubham, you all are right. Agrima, Nancy, you all are right. The next is question number 23. देखो ये काफी न्यूज में चल रहा है एक्चुअली. जब when there was COVID, it was very much in the news. TRIPS, trade related aspects of intellectual property rights, which is in the news, is related with World Bank, World Economic Forum, International Monetary Fund, World Trade Organization. What is the right answer? बताओ. देखो, I have told you what is the keyword here. Trade related. Trade. I have told you कि अगर कई keyword match करा तो try to match it. The right answer is D. Yes, Vaidehi, Nancy, John T. Chenmay, you all are right. Okay, D. Yes, D is the right answer to this question. ये है. देखो ये actually intellectual property को protect करने के लिए. Intellectual property means like copyright and all, and a patent and all. It was in the news because when COVID-19 was happening, India, South Africa especially requested to waive IP waiver or TRIPS waiver. TRIPS waiver के लिए request किया था. ठीक है, so India and South Africa especially requested. It was very much in the news during second wave actually. ठीक है, so TRIPS उस टाइम पर काफी न्यूज में आ रहा था, and TRIPS is very famous, so you must be knowing it. ठीक है, okay, yes. मतलब इससे होगा क्या? What is the benefit that others can also manufacture these vaccines, है ना? So that because it was required to manufacture it in a very fast way, in good amount, है ना, इसीलिए. Okay, before moving on, guys, there's a small announcement. We are running this CAT 2023 comprehensive program. 300 plus engaging videos, 135 plus live sessions, 75 plus mock test, and 1000 plus practice questions are there. And yes, on 3rd May, one day before the exam, we will be having 8 hours non-stop marathon. इसमें भी बहुत सारे important topic wise discussion करूँ. जैसे अभी economics, science and technology कर रहा हूँ, वैसे ही I will be discussing very important ones. So do follow me also in the same class. तो मैं भी लूंगा उसमें से एक क्लास. ठीक है, I mean कंटिन्यूअस चलेगा. So just you should be knowing it. सब्सक्राइब कर लेना गाइस नीचे चैनल को, everyone, so that you will get the notification.
ठीक है. And yes, please download the app, go to CAT section and you can play a lot of quiz there as well. And yes, we are running a CAT comprehensive course CAT series also on the same YouTube channel, so please subscribe to that channel. The next is where is the headquarter of WTO? Very famous, very easy. World Bank, Washington DC, Geneva, Berlin. What is the right answer? Headquarter of WTO कहाँ मिलेगा? The right answer is yes, the right answer is Geneva, Switzerland. C is the right answer. ठीक है. ओके. जेनेवा में बहुत सारी चीज का WTO, WHO, आई थिंक WMO का भी, ठीक है, सबका हेडक्वार्टर जेनेवा में. जेनेवा में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हेडक्वार्टर्स. ठीक है. सी इज द राइट आंसर. यस, मेनी पीपल हैव आंसर्ड इट. आई कैन नॉट टेक एवरीवन्स नेम, है ना. एंड नगोजी कोंजी इवाला इज एक्चुअली द डायरेक्टर जनरल. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट वन, इसको पढ़ लेना, है ना. द नेक्स्ट वन इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अब हम लोग आ जाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Which of the following about plant is correct? This is talking about the relation of respiration and photosynthesis. इससे related है कि whether both are at the same speed, photosynthesis is faster, respiration is faster, there is no connection. What is the right answer? बहुत interesting question है. I know कि थोड़ा सा tough होगा. I mean, I have told you ना, they ask a lot of questions from biology. I don't know why they are asking, but yes. So this is of course a biology topic. ये स्कूल में ही पढ़ाया जाता है. आई होप यू आर अवेयर, बोथ गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन. द फोटोसिंथेसिस गोज लाइक दिस और रेस्पिरेशन गोज ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. द केमिकल रिएक्शन, यस, है ना, जो भी आप कह लो उसको. द राइट आंसर इज यस, शुभम शर्मा, दीपेंद्र, हाँ, नैन्सी, कोदिदास. फोटोसिंथेसिस इज फास्टर एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन. ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. देखो होता क्या है, this is actually, I hope you are aware of this. ये फोटो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे अलग से बना देते हैं ना. C6H12O6, है ना, प्लस 6O2 कर देंगे. यहाँ पे बना ही रहने दो. रेस्पिरेशन, दिस इज रेस्पिरेशन. ठीक है. सो वी एज अ ह्यूमन, जब हम लोग सांस लेते हैं लंग्स में, वी टेक ऑक्सीजन, है ना, एंड वी ट्रांसलेट इट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम नोज, राइट, है ना. And this is done by photosynthesis by plants. तो opposite direction में होता है, right? So they make this and they break glucose, ना, and they release. ठीक है. So both are actually in opposite direction. But in the night the plant do this also, है ना. आपको पता होगा रात में plant ऐसा कुछ करता है. And that is why it is said कि in the night please do not go near the plants because they are also doing respiration, है ना. So I hope you are aware of this, है ना. Opposite direction में जाता है. देखो ये ऐसे जाता है. So photosynthesis will go in this direction, respiration will go in this direction. दोनों opposite direction में होता है. Please be aware of it. They've asked it. और photosynthesis is faster than respiration. Okay, इसमें chloroplast वगैरह की जरूरत होती है. I hope you are aware of this, chlorophyll and all. Chlorophyll की जरूरत होती है ना. Yes. The next one is, this is a quite interesting question. Please answer this question. This is a very easy question. You won't believe. जितना लंबा चौड़ा question होता है, this is a previous year question. The bigger the question is, the easy it is. So even if you have not read this topic, if you have some basic idea, you could have reached to the answers. That is what I am telling you. So this question is talking about BrahMos missile के बारे में पूछ रहा है ना, कि BrahMos missile क्या होता है. Okay. Now, अब आप पढ़ो इसको कोई ऐसी चीज लग रहा है जहां तक आप आंसर पे पहुंच जाओ. Yes, Agrima, Saxena, Kaushal, you are the right. हाँ, बस एक जगह पकड़ लोगे समझ जाओगे. It is a ramjet supersonic missile. अच्छा, इतना तो पता होगा कि BrahMos is a missile. You know this thing? कि this is a missile developed, है ना? इतना पता होगा. Now understand one thing. ISRO is responsible for what? Making a spacecraft. DRDO is responsible for making missiles. इतना तो पता होगा ना? You know the difference between the working of ISRO and DRDO? ISRO is responsible for a space related mission. DRDO is related with making tanks, making these things, है ना, like missiles, rockets and all. And HAL, Hindustan Aeronautics Limited, is supposed to make planes like Tejas plane.
जेट्स यू कैन से, है ना। तो ये बेसिक अगर आपको आइडिया होता तो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड इट, यू कुड हैव जस्ट एलिमिनेटेड ऑप्शन 1 एंड यू वुड हैव आंसर्ड टू द पॉइंट, ठीक है। ये सही है, एनपीओ रशिया के बन के बना है ना। हाँ यस, देखो अब आप एक चीज देखो, ब्रह्मोस इज एक्चुअली द नेम कम्स फ्रॉम वेयर, इफ यू कट इट, बीच से काट दोगे तो BRA ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्रा, which is actually a river in India, and MOS is Moskova. Moskova is actually a river in Russia, and it is the joint initiative of India and Russia. So this is Indian flag, this is Russian flag. Okay, ठीक है, is it clear? है ना? And this is actually a very high quality supersonic cruise missile, DRDO and NPO. This is actually the, you can say, the agency of Russia which has made it, है ना? Okay, cruise missile मतलब है कि वो अपना path follow कर सकती है move करके, है ना? It can change the path and all, and actually during the journey and all. ठीक है, ramjet supersonic cruise missile and all. The next one is which of the following gas is used to disinfect water? Ozone, chlorine, nitrogen, ozone and chlorine. Water disinfectant में कौन सी क्या चीज यूज किया जाता है? These are I mean taught in school days and all, chemistry में पढ़ाया जाता होगा शायद, I think 7, 8, 9, 10 की बुक्स में ये सब होता है। अच्छा आपने सुना है, आई होप यू आर अवेयर, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOClOCl, इस तरह करके कुछ होता है ना, CaOClCl समथिंग लाइक दैट, है ना, इस तरह, है ना। यस, CaOClCl समथिंग, हाँ। तो क्लोरीन तो होता ही है, तो आपको जानते हो, और ओजोन भी होता है, सो द राइट आंसर इज डी, ठीक है। क्लोरीन एंड ओजोन बोथ आर यूज्ड, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड स्ट्रक्चर होता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स कॉल्ड, है ना। इट इज ऑफ कोर्स यूज्ड इन क्लीनिंग एंड ऑल, एंड ओजोन का भी यूज होता है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज डैश वेरीज डायरेक्टली विद एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ अ साउंड, मॉड्यूलेशन, क्वालिटी ऑफ साउंड, टोन ऑफ द साउंड। बताओ इसका आंसर, आसान है सब। एक्चुअली इट्स लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है ना। तो आप ये रखते ना, एम्पलीट्यूड जो होता है लाउडनेस पे डिपेंड करता है, ओके। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी जो होता है, देखो यहाँ देख लो, एम्पलीट्यूड है ना, देखो ये इमेज याद रखें, एम्पलीट्यूड कम है तो आवाज कम होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पिच ज्यादा होता है, आवाज की पिच ज्यादा होती है ना, ओके, है ना। तो ये आप देख सकते हो, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जितना जल्दी जल्दी हो, है ना। सो दिस इज लेस फ्रीक्वेंसी, दिस इज मोर फ्रीक्वेंसी, राइट, है ना। सो द पिच इंक्रीजेस इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, increase in frequency. Okay, one more thing you should be knowing, longitudinal and transverse waves कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो light is considered as transverse waves and sound is considered as longitudinal waves, ये कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, पूछते हैं, ठीक है। that which of the following is transverse, which is, so light is transverse और longitudinal मतलब sound waves। तो longitudinal में जिस wave direction में जा रहा है उसी same direction में movement of particle होता है, okay, the particle movement and the direction of wave is same, but in this case actually they are perpendicular. I'll show you, okay, it's not very tough। देखो साउंड वेव्स ऐसा कुछ जाता है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन हो गए, राइट, इट गोज लाइक दिस, है ना। सो वेव का डायरेक्शन ऐसे है, ओके, द साउंड वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड द कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन आर आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज साउंड वेव, और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ठीक है, ओके। नाउ ट्रांसवर्स वेव ऐसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे होता है, राइट। सो मूवमेंट कैसे और था, देखो ऐसे, दिस इज, यू मस्ट हैव सीन दिस, राइट, कि दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन एंड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव, ओके, एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइट, सो लाइट कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रांसवर्स वेव, है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डायरेक्शन ऐसा होता है, तो परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है ना। सो लाइट्स आर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसे पूछते हैं, जैसे दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, and here is you will find light, we have discussed it, है ना। तो ये 400 से 700 नैनोमीटर होता है ना, लगभग, so this is 400 नैनोमीटर, 380 के आसपास, and wavelength, and this is 700 के आसपास नैनोमीटर, I'm telling wavelengths, है ना। वेव गए और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना।
So just have an idea. The next one, yes, आप पढ़ लेना इसको because these are very famous, है ना. So रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ जाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आप देख रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितने ज्यादा है ना. So frequency increases and all, and wavelength decreases, ठीक है. और E is equal to, E is directly proportional to frequency. So frequency is directly proportional to energy and all, है ना. E is equal to hc by lambda, ये होता है ना. Let me tell you. Energy is equal to hc by lambda, or E is equal to h nu, means frequency. So energy is directly proportional to frequency, and energy is inversely proportional to lambda. Lambda means wavelength. ये सब बेसिक चीज है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है. So you must be knowing it. Okay, the next is, which of the following is true? Salt water freezes at the same temperature as fresh water, at a slightly lighter, higher temperature, slightly lower temperature. Sea water does not freeze. बताओ, what is the right answer? The right answer is C is the right answer. Slight water, slightly lower temperature, कम ही टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाता है. So C is the right answer to this question. Go and find out the reason. It's a homework. ठीक है. I'm not going in detail, otherwise it will take a lot of time. ठीक है. Salt की वजह से पहले ही ठंडा हो जाता है. ठीक है. So the next one, इसलिए ऐसे भी लिखा आता है. Instead of salt water, they will be writing ocean water freezes. I mean slightly at a lower temperature. इस तरह वर्ड लिखेंगे because ocean water has having a lot of salt. Yes. The next is, human eye is most sensitive to which of the following color in the day? Yellow, green, yellowish, green, red. सेंसिटिव मतलब किसको सबसे आसानी से रीड करके इंस्ट्रक्शन सिग्नल ब्रेन में भेजा सकता है. सो विच कलर इज द मोस्ट सेंसिटिव? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन गाइस 100+ लाइक्स ले जाओ. द राइट आंसर इज येलोइश ग्रीन. सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. मैं आपको ये चार्ट दिखा दे रहा हूं. आई हैव टेकन इट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटीज वेबसाइट. अगर आप गौर से देखोगे यहां पर है ना, दिस वन येलोइश ग्रीन रीजन इसको कहते हैं. ठीक है, यहां पर इंसान का है ना, देखो दिस रीजन जनरली. ओके यस, तो राइट आंसर इज सी, है ना. ओके, यू शुड बी नोइंग इट. द नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टीवी रिमोट. ये तो बहुत इजी है, बचपन में पढ़ाया जाता है. अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, लेजर, रेडियो वेव. कौन सा वेव यूज किया जाता है टीवी रिमोट में? देखो कुछ तो अपना लॉजिक से भी आंसर कर दोगे, बट नो नीड लॉजिक. आई मीन दीज आर बीइंग टॉट इन स्कूल डेज के इंफ्रारेड यूज किया जाता है रिमोट में, है ना. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना. ओके, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच बिकॉज यू नो इट. द नेक्स्ट वन इज, डैश इज गेन्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड अपवर्ड्स वर्टिकली. सिनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. हालांकि ये इसके पार्ट ही हो गया, बट स्टिल आई डोंट नो दे गिव दिस क्वेश्चन, सो आई एम आस्किंग. मोस्ट परफेक्ट आंसर बताना. बुलेट अगर ऊपर जाएगा फायर्ड वर्टिकली अप, तो क्या होगा? देखो ये तो आप जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच, है ना. mgh लिखते हैं फिजिक्स में, इसको लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर. यस, काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो हाइट से पोटेंशियल एनर्जी का लेना देना है ना. सो इफ यू गो हाइट एंड ऑल, है ना, सो द वेलोसिटी डिक्रीजेस एज वी गो अप, है ना, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल. सो सी इज द राइट आंसर, है ना. हाइट पर है तो पोटेंशियल है, इसको गिरा दिया, नीचे आया तो यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, है ना. यस, आई होप यू आर अवेयर. So B is the C is the right answer to this question. अरे D कैसे लोग कर रहे हैं? अरे पोटेंशियल एनर्जी गाइस. ओ माय गॉड, देखो मैं बताता हूं. जब आप इस बॉल को ऊपर ले गए तो यहां पर एनर्जी क्या होगी? जो बॉल का मास होगा इंटू जी इंटू हाइट. जिस हाइट पर आप ले गए, मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है. जी मतलब 9.8 वाला, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, 9.8 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑल, है ना. ओके, मास इंटू जी इंटू एच. ओके, अब मान लो बॉल यहां पर बीच में कहीं पे है, तो इसमें mgh भी लगेगा और हाफ mv स्क्वायर, जो उसकी वेलोसिटी यहां पर एकदम जब यहां पहुंच जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी. तो ये हाइट 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा. हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, जो इसकी मास. और ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी बताता है. ये दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और नीचे में आगे सिर्फ चूंकि हाइट 0 हो जाएगी तो फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से बचेगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद हाइट, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद वेलोसिटी. ये तो बेसिक क्वेश्चन है गाइस, आई मीन दीस आर टॉट, है ना. सो यू शुड बी नोइंग इट. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना. The next is, grapevine is the term used in relation to group communication, formal, informal, email communication. What is the right answer? grapevine term कब यूज किया जाता है? The right answer is informal communication. पढ़ लेना. C is the right answer to this question.
The next one is, which of the following copper alloys is used for manufacturing springs and suspension filaments in electrical instrument? Bronze, aluminium, bronze, German silver, phosphorus, sulfur. रट लेंगे नहीं, वैसे ही रटने का नहीं है, बस मैं अब इतना याद, तो अगर आपको रटना भी है, इट इज रिलेटेड विथ हाइट, ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ स्पीड, ठीक है, अगर इतना भी है ना, अगर आपको रटना ही है तो ऐसे रटना, ठीक है, कुछ हाँ। कॉपर अलॉय, सो फास्फोरस ब्रॉन्ज। अच्छा, कोई पता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है? दिस देयर इज नो सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, गो एंड फाइंड आउट, ठीक है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज इज यूज्ड, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब में फास्फोरस ब्रॉन्ज वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है, स्प्रिंग्स बनाने में, फिलामेंट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये सब यूज करने में, सो डी इज द राइट आंसर, ओके। The next one is, chlorophyll is used in photosynthesis, contains which element? Magnesium, manganese, cobalt, uranium. This I think I have taught. So the right answer is actually magnesium, not manganese. So ये बता चुका हूं मैं, देखो बीच में ये chlorophyll में use होता है, magnesium होता है ना, so A is the right answer. Okay, the next one is, which of the following types of lights are strongly absorbed by a plant? इसका आंसर बताओ तो, these are questions can be asked, ठीक है। What is the right answer? द राइट आंसर इज ब्लू एंड रेड, ये याद रखना, इसको कुछ में रटना ही का है, जो भी आप कह लो। देखो तो ब्लू वाला रीजन देखो, ये वाला ब्लू वाला रीजन है और ये वाला रेड वाला रीजन है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा लाइट क्लोरोफिल वगैरह अब्सॉर्ब करता है, सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। So I cannot help much because this is, you have to rote learn, ठीक है, so B is the right answer. The next is, fruits stored in a cold chamber exhibit longer storage life because of what? जैसे कोल्ड स्टोरेज में आप रखते हो या फ्रिज में डाल देते हो तो ज्यादा दिन तक चलता है, क्यों? ठीक है, आप लोग बता पाते हो कि नहीं? देखो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन सही हो, बट मोस्ट परफेक्ट आंसर व्हाट विल बी द मोस्ट परफेक्ट वन? द राइट आंसर इज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, ये आंसर होता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आई नो इट्स अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन, है ना। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नहीं, ह्यूमिडिटी कारण क्यों? वैदेही वंशिका, यू आर राइट, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है, इसलिए खाना देर तक रखता है। which of the following cell organelle play the most important role in protein synthesis? देखो जो एनिमल सेल या प्लांट सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, लाइसोसोम होता है, आई मीन एनिमल सेल में लाइक डिफरेंट थिंग्स है ना, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उसी को सेल ऑर्गेनेल कहते हैं ना। So like you must be aware, mitochondria is famous for what? Powerhouse of the cell, and it is famous for providing energies and all, है ना। But protein synthesis कहाँ होता है? So it is done in, आपने राइबोसोम को तो नाम सुना होगा, it is famous, and endoplasmic reticulum and ribosome is famous for that, ठीक है। और अगर एनर्जी वगैरह बनती है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना, इसे पता होना चाहिए, है ना। So B is the right answer. Yes, go and read it. Ribosomes यहाँ बनता है, endoplasmic reticulum and all. The next is question number 38. Yes, B बहुत सारे लोगों ने आंसर किया। Yes, Vayashi, Agrima, Rocky, you are right. Which of the following elements are responsible for origins of life? Hydrogen, oxygen, sodium, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus, carbon, hydrogen, potassium. कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस, एवरीवन। यस, द राइट आंसर इज CHN, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, याद रखना। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले ये तीनों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, बाद में फिर ऑक्सीजन वगैरह एंड ऑल, बट दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू मस्ट बी नोइंग इट, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन मेनी स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम्स, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, और इनिशियली साइनोबैक्टीरिया वगैरह था, सो द फर्स्ट लिविंग इज साइनोबैक्टीरिया, इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। The next is, water can dissolve more substance than any other liquid because it is dipolar in nature, it is a good conductor of heat, high value of specific heat, it is an oxide of hydrogen. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब बताओ? What is the right answer?
Because it is actually देखो this was asked in some very standard exam. I know थोड़ा सा tough question है, but I'm giving it maybe because इस तरह का question उन्होंने दिया है, so it is dipolar in nature. तो कई बार questions they copy from different exams. That is why I've given it. Water is called as universal solvent, है ना? It can dissolve almost everything. So A is the right answer because of polarity. H plus होता है, यहाँ पे negative होता है, ठीक है? So that is why it is said कि the water can dissolve a lot of things. The right answer is A is the right answer to this question. ठीक है? The next one is bile juice is made in dash and stored in dash. Pancreas, liver, gallbladder, stomach, liver, none of the above. What is the right answer? Bile juice काफी famous होता है. It is actually made in liver and stored in gallbladder. ठीक है? So the right answer is B is the right answer to this question. Yes, Aman, Namesha, you all are right. ठीक है? याद रखिएगा. ठीक है ना? कई बार पूछा जाता है ये सब एग्जाम में. The next one is यही है. देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. Which acid is produced in stomach? HCl, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid. What is the right answer? This is also very easy. एग्जाम में पढ़ाया जाता है, मतलब स्कूल लाइफ में HCl है ना, तभी भी एसिडिटी हो जाता है तो यही गड़बड़ा जाता है ना. So when acidity happens in your stomach, it is related with HCl. So we have naturally production of HCl inside our stomach. So A is the right answer. Which of the following is both endocrine and exocrine gland? कौन सा endocrine और exocrine दोनों gland है? पिचरी gland, pancreas, pineal gland, thyroid gland. And the right answer to this question is pancreas. ये याद रखिएगा बस, ठीक है? ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है asked in exam. Endocrine एक duct होता है, एक ductless gland होता है, ठीक है? So you should be knowing it. B is the right answer to this question. थोड़ा सा पढ़ लोगे कि what is endocrine and what is exocrine gland. Okay, so just go and read it. यहाँ पे pancreas है ना. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S Exam Prep app. I'll be meeting you tomorrow at 3 PM. ठीक है? और 3rd May को we will be having marathon section from 11 AM onwards. ठीक है? So do join that as well. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.